आई डोंट सी बिग इन ईवी ओके बिकॉज सब लोग ने सुना है ईवी का बैटरी, अभी तो बच्चे को ही मालूम है, ईवी का बैटरी बनाने के लिए पूरा माउंटेन को काटो तो इतना उसमें से मेटल निकलेगा ईवी बैटरी बनाने को. सो I don't see future of EV. In fact, I spoke to some engineers in some other countries with manufacturers, BMW and Mercedes, and even they said that they are doing EVs just because the government is pushing them to. It is mandatory for them to do it. But hydrogen is future. I've come to a rule of thumb: for every 100 horsepower, you need about 12 lakh rupees. ओके Okay, this was say pre-COVID time. Abhi dollar बढ़ गया. I'm Okay. changing it to 14 lakhs now. Okay. So every 100 horsepower you need 14 lakhs. If it's 200 horsepower, you need 28 lakhs to build the car. Because it's not just engine, it's suspension also. Correct. So if 300 horsepower, you need brakes worth 300 horsepower to stop the car. Agreed. It's 300 horsepower, you need suspension for 300 horsepower. यस Yeah, so a 300 horsepower car is going to touch 35-40 lakhs. There's Right. a saying, no, क्या है वो? When you hit a wall, torque is how hard you hit, and horsepower is how further you take the wall with you or something. Right. So Absolutely. the 2JZ makes so much of torque because it's inline six. You do little changes to it in original format. From 280 horsepower, very comfortably it'll jump to 330, 350 horsepower. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट पे. दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनको भारत देश का ईवो किंग कहा जाता है. ईवोज एक ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फैक्टर है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं. जी हाँ, वो सिर्फ ईवोज ही नहीं, वो कुछ ऐसे ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं जिनको बहुत सारे लोग सराहना करते हैं, बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, और ये बहुत रेयर जेम्स के तौर पे आज भारत देश में घूम रहे हैं. जी हाँ, हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर करण शाह. करण शाह का खुद का एक केएस मोटरस्पोर्ट्स नाम का वेंचर भी है. वो अपना वर्कशॉप मुंबई से ही चलाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है, बहुत सारे ऐसी ऐसी गाड़ियों पे काम किया जाता है ट्यूनिंग के माध्यम से कि जो हम शायद सोच भी नहीं पाते हैं. मुझे पता है आप में से कई लोगों को अभी फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी कुछ मूवीज़ याद आ रही होंगी, तो आप हमारा आज का पॉडकास्ट ज़रूर देखिए और आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है और कितने ज़्यादा एफर्ट्स के बाद आपको वो आउटपुट दिखता है जिसकी आप सराहना करना चाहते हैं, जिसको आप सिर्फ देखते रहना चाहते हैं. इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का जो पेस है वो अगर धीमा लग रहा है तो आप इस पॉडकास्ट को 1.25 की स्पीड से भी सुन सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से कई हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे पॉडकास्ट को नियमित तौर पे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. जय हिंद दोस्तों. हेलो सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपके जितने भी यूट्यूब पे फेमस वीडियोस हैं उन सब ने आपको एक टाइटल दिया है जिसको कहते हैं दैट यू आर द ईवो किंग ऑफ दिस कंट्री. ओके, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप उस टाइटल तक पहुँचने से पहले आपने क्या क्या किया है जिसकी वजह से आपको वो टाइटल मिला है. थैंक यू. आई एम ग्लैड आपने ये पूछा कि टाइटल तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया है, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स टाइटल पे पहुंच गए हो, ईवो ही बना रहे, बट ऐसा नहीं है. तो आई स्टडीड इन यूएसए. Okay. एंड आई केम बैक. फॉर्चुनेटली फैमिली का पेट्रोल पंप था तो आई कुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर. तो वी मेड अ कार फॉर अ फ्रेंड, फॉर माई सेल्फ, कि चलो कुछ फास्ट करते हैं. तो तभी तो होंडा सिटी एंड लैंसर्स थे. दिस इज इन द ईयर 2001. तब आप जस्ट रिटर्न आए थे. जस्ट educated young boy back from USA. ओके तो तभी Honda City and Lancers were around. ओके So we started working on those cars, and after a few years we encountered JDM engines. Looking for these parts for these cars, we reached Thailand, Malaysia, Japan. So there we realized, oh, there's something called JDM, ओके Japanese Domestic Market. Correct. engines. तो फिर एक दो वो engine लेके आए. Okay. होंडाज में वो लगाया, कुछ साल ऐसे चलाया कि चलो ये होंडा चल रहा है, फ्रंट व्हील ड्राइव, 200 हॉर्स पावर. करेक्ट. देन वी गॉट
we were introduced to the Evo by somebody. He said, अरे ये Evo देखो, ये Evo का engine मिलता है. तभी तो- just Evo सुना था कि Evo है, something called the Evo. तो क्या होता है वो एग्जैक्टली? Evo is actually Mitsubishi made a Lancer. Mitsubishi made a model called the Lancer. ओके Mitsubishi then made a evolution of the Lancer. So Lancer was a road-going version, करेक्ट. and then they said, let's take this Lancer, make it give it more horsepower, give it four-wheel drive, थोड़ा handling और सही किया, which you can do in tarmac, rallies and all of that. If you see the Tommy Mackinnon edition and all that. So Mitsubishi took the Lancer, evolved it into called the Evolution 1. ओके Then the following year they made Evolution 2. And 2-3 years later they made Evolution 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finally now we are on Evolution 10. ओके They don't make them anymore, but they start. Their journey is from 1 to 10. ओके So I made the Evo 4, 5, 6. Those were based on the Indian Lancer. ओके It was sold all over the world as the Lancer. Mitsubishi took that and made it into Evolution 4, Evolution 5 and Evolution 6. Those are the ones that we made. We made about 15 of them. सो आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिया में प्रोडक्ट नहीं था, आपने यहाँ पे इंडिया में खुद से उसको बना के लॉन्च किया बेसिकली? Yeah, not like a launch, but yeah, I made those cars. So they were already Indian cars थे. तो मेरे को मैंने उसका मसाला सब निकाल दिया, सिर्फ बॉडी रखा और जापान से सब लेके आए, सस्पेंशन, इंजन, चेसी, ऑल ऑफ दैट, एंड यू पुट इट इनटू दिस Indian Lancer. So Indian Lancer essentially became an evolution like a JDM, Evo 5, Evo 6. That is what we did with the Lancers. ओके So they were front wheel drive. हम लोग ने उसका four wheel drive किया. They were 120 horsepower. हम लोग ने उसका 280 horsepower कर दिया. ओके सो मुझे पता है आप जब ये कह रहे हैं कि हमने उसको कर दिया, वो कहना जितना आसान है उसके पीछे की मेहनत उतनी आसान नहीं है. वो बहुत ज़्यादा समय भी लेता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी जाती है, एफर्ट्स जाते हैं और पूरा एक टीम वर्क जाता है. ओके तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसलिए है क्योंकि आपके पास अगर कोई अपनी कार लेके आता है कि करण सर ये हमारी कार है, मेक इट इनटू ईवो, तो इज इट कि वो उतने आसानी से बन जाती है या उसके पीछे क्या लगता है, वो सामने वाले को समझाना कितना मुश्किल हो जाता है? नहीं, इट्स नॉट दैट इजी. ऐसा नहीं कि कोई भी गाड़ी बना के फास्ट कर दो या यू नो देयर आर सर्टेन कार्स, ओनली सर्टेन टाइप ऑफ कार्स विच कैन बी मेड फास्टर. ओके If you give me like today's generation, a Honda City, ओके yeah, you cannot make it any faster because already it's the fastest built from the manufacturer. You know, it's an economical car. Honda ने उसको इकोनॉमी में बनाया, तो उसमें से और हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे. तो कोई Honda लेके आएगा तो मैं लगेगा सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू मच, मेरे को पैसा देके फ़ायदा नहीं है. यू नो यू मे गेट लाइक 10 horsepower more at the most. ओके So not all cars are doable. ओके तो इस बात पे थोड़ा अगर पीछे चलें, जब आप जस्ट इंडिया में पढ़ाई ख़त्म करके आए थे, उस समय में इंडिया में ऐसी कार्स ढूंढना जो डुएबल कहला सकें या जिस पे ऊपर काम किया जा सके, वो इजी था, चैलेंजिंग था? हाँ, there were Honda Cities and Mitsubishi Lancers. These Okay. two were the easiest cars that you could take to modify. गुड रीज़न? Because they were already Japanese cars. वो लोग के the counterpart of those cars sold in UK and USA and Japan already had a faster engine. Like अपना Indian Lancer था, उसमें already Evolution में बिक रहा था, कोई दूसरे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में बिक रहा था या इंग्लैंड में बिक रहा था. करेक्ट. So Honda City also had another version, of course a larger version called the Civic with a more powerful engine. ओके So we started with this Lancer and Hondas because वो USA में और सब जगह पे Lancer Honda पे काम कर रहे, तो हम लोग यहाँ भी उस पे करेंगे because तभी दूसरा क्या था, S-Team था. राइट. या मारुति का और कौन सा गाड़ी था, आई डोंट रिमेंबर. सो इट वाज आइदर S-Team और Lancer और Honda, only these three cars. There was nothing else that you could go buy affordable. Agreed. If you are very wealthy and you could just go buy a BMW or something, then वो तो स्टोरी खत्म हो गया वहाँ पे. मगर अगर कुछ बनाना था तो it was only S-Team, Lancer and the Honda City. ओके तो इसमें एक और बात इम्पॉर्टेंट है, जैसे आज की तारीख में जितने भी नए लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ओके, उनको एक चीज़ बताई जाती है बाय द सेलर्स, जो जब वो हैंड ओवर करते हैं गाड़ी को, कि सर इसको पहले 200 किलोमीटर्स तक इतना ही स्पीड लिमिट तक आप रन कीजिएगा और फिर उसके बाद फर्स्ट सर्विसिंग के बाद इसको आप आगे रेव अप कर सकते हैं. नाउ पॉइंट ये है कि इसका कोई ख़ास वजह होता है
क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बेफिजुल की बातें हैं, हम लोग डे वन से रेव कर सकते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इट हैज़ टू बी डन इन द राइट वे। तो एक्चुअल मिथ क्या है और ट्रुथ क्या है? It is the truth. Engine is moving part. Piston ऊपर नीचे जा रहा है, तो जी। it is rubbing, scrubbing against the other part of the metal. करेक्ट। If you see in an all aluminum engine, if you आप ऑयल चेंज करोगे पहले 1500 किलोमीटर में, आपको शायद कुछ pieces of metal दिखेगा, which is Okay. not wrong. It is correct. It's the casting of the side of the aluminum underneath the engine, which is all falling into the sump. और वो जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है एक साइड पे, ऐसा नहीं है कि वो इंजन में घूम रहा है, Okay. राइट? बट द पॉइंट बीइंग के इट्स मेटल, इट इज गोइंग टू वेयर टेयर, कुछ होगा, फ्रिक्शन सर्फेसेस विल मेट टू ईच अदर. वंस द ऑयल चेंज इज डन, यू योर सेल्फ विल रियलाइज कि माई इंजन इज फीलिंग लिटिल बेटर, मतलब ये रनिंग इन हो गया है. ओके। दिस इज द मेटल पार्ट ऑफ इट. ओके। माई पर्सनल ओपिनियन इज टू एनीबडी इज व्हेन यू बाय न्यू कार, उसको थोड़ा इस्तेमाल करो, वापरो, समझो, हैंडलिंग समझो क्या है, बॉम्बे लोनावला घाट चढ़ के जाओ, न्यू कार, यूल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये ऐसे चल रहा है. बिकॉज इफ आफ्टर 1 year यू कम टू मी एंड से कि इसको कुछ करके दो, एंड इफ आई मेक इट फास्टर, और इफ आई पुट सस्पेंशन which will handle little differently. Okay. So only if you've got previous experience of the car running in stock format will you understand, by giving me money and putting parts, now what is the difference from before to after. बिल्कुल। So metallurgy wise as well as learning your own car wise, 500,000 किलोमीटर 3-4 महीने तो गाड़ी को स्टॉक रखाओ, चलाओ, प्यार से करो, और अपनी गाड़ी है ना, अपना ही पैसा लगा, थोड़ा प्यार से वापरो, उसके बाद तो यू कैन स्टार्ट अब्यूजिंग इट. ओके। तो आपका एक बहुत फेमस गाड़ी हुआ था जो यूके की एक मैगजीन के कवर पेज पे भी आया था, इट्स एम्बेसडर, करेक्ट? तो आप हमें उस एम्बेसडर का एक स्टोरी बताइए, जो आपने उसमें क्या काम किया था, वो प्रोजेक्ट आपके पास कैसे आया था से लेके आपने उसको डिलीवर करने तक का बता दीजिए. So, a gentleman from Indian man staying in the UK. ओके। He approached me. He said his office approached me saying कि हम लोग को एम्बेसडर बनाना है, 200 horse power एम्बेसडर. ओके। हाँ, मतलब बन सकता है, बट इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक. Right. इट्स नॉट जस्ट इंजन डाल दिया, स्टार्ट किया, 200 horse power हो गया, जाओ. सस्पेंशन चाहिए, गाड़ी टर्न भी लेना चाहिए, जी। रुकना भी चाहिए, ब्रेक्स भी होने चाहिए, ओवरऑल हैंडलिंग होना चाहिए. एंड व्हेन यू हैव 200 horse power कार, even the chassis dynamics, the twist of the body has to be controlled. करेक्ट। So I said it's a whole package, it will take a while to make. He राइट। said, no problem, go ahead, make it. So Okay. he financed the project, he started funding it. Almost when 3/4 of it was over, just ready to put it into paint, unfortunately the gentleman passed away. ओके। So, of course his office paid me the money, finished the car, वो लोग Right. लेके गए. ओके। मगर ना वो थैंक यू सुना नहीं मैंने कि यार केएस थैंक्स यार, मज़ा आ गया गाड़ी बना के. सो आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी एल्स कि मेरे को और एक कोई बोलो यार एम्बेसडर कोई बना के दो. तो एक मिला मेरे को और एक आदमी फ्रॉम Okay. साउथ इंडिया. पागल ही बोलते ना सब लोग ऐसे करते, तो मैं और एक पागल मेरे को मिल गया, बोलता केएस गाड़ी बना. तो फॉर हिम आई मेड अ वाइट वन. ओके। उसने बोला थैंक यू बनने के बाद, तब मैं समझ गया कि बस अभी ये मेरे को नहीं करना, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट एम्बेसडर के पार्ट्स ढूंढना. कुछ कांच टूटा तो कांच फिर वो वेस्ट बंगाल में ढूंढो, उसका वो रबर का पट्टी नहीं मिलता है, यू नो वायरिंग सीक्वेंस यू डोंट गेट, एवरीथिंग is just brand new. You have to keep buying from Japan and putting it. So we used everything out of a Nissan S13. So if you do a search of Nissan S13, it's actually a car used in Japan for drifting. करेक्ट। So it's that same identical chassis of the S13 which is now inside an ambassador. So Oh. if you take the ambassador out on the track, it will drift because it's got the S13 drivetrain, suspension, engine, gearbox, everything. मतलब बाहर से देख के आपको ऐसा लगेगा कि कोई आम इंसान एक आम एम्बेसडर चला रहा है, हाँ बिल्कुल. और जब आप उसको ट्रैक पे लेके जाएंगे तो आपको हाँ. पता चलेगा कि उसके अंदर एक 20। In fact, not even track. I have been sent videos, or I've seen on Instagram. Somebody in a Volkswagen was driving. He was making a video for himself कि देखो मैं 140 पे चला रहा हूँ, और फिर उसने वीडियो ऊपर किया
तो आगे एम्बेसडर उससे फास्ट जा रहा था. सो देन आई रियलाइज ये तो मेरा एम्बेसडर बना हुआ है. तो दे वर टॉकिंग इन द साउथ इंडियन लैंग्वेज. आई डिडंट अंडरस्टैंड कि लुक द एम्बेसडर गोइंग फास्ट. तो दैट वाज प्लेजरेबल. बट या यू कैन इमेजिन कि एम्बेसडर 140 जा रहा है, आप उसके पीछे चल रहे हो. सो देयर इज अ स्टोरी, वियर्ड है. देयर इज अ स्टोरी टू दिस. मुझे याद है कि आपने एक वन ऑफ द वीडियोस में आपने ये बताया है कि जब आप खुद इसका टेस्ट ड्राइव्स ले रहे थे इन मेकिंग के समय पे, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुआ था मुंबई के एक फ्लाईओवर पे. आप वो बताइए. So Eastern Freeway पे I was coming means on the Eastern Freeway. तो वहाँ पे एक टर्न आता है. It's a right hand side, it's a right turn, and there was a BMW 3 Series or 5 Series on the inside of on the inner lane. Okay. I used the outer lane and I took a turn. Okay. And I overtook him on the turn because I had the handling of the Nissan. Correct. So at first he was next to me saying good car, good car, good car. जब भी turn आया, I took the car. After that he's wondering कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है. I did not stop. I just went away. Okay. Did he pull you over again? No. He just did thumbs up and he looked at me and he went away. And then, Okay. yeah. So basically he must be thinking कि पहले मैंने बोला ये तो एम्बेसडर है, सुपर भी अच्छा क्लीन एम्बेसडर है. अभी देख रहा है he cannot keep up to the turn in the ambassador in the BMW with the ambassador. So he must have thought there's something weird in this. ओके. बट आई रिमेंबर कि आपने एक और चीज़ बोला था कि एक तरीके से ये आपका फ्रस्ट्रेशन भी है कि कई बार होता ये है कि अगर मेरे पास एक एम्बेसडर पड़ी है, लोग आपको कॉल करते हैं कि केएस मेरे पास एक एम्बेसडर है, बना के दो. बट उनको ये नहीं पता चलता है कि इसके पीछे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होता है. तो वो आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़. So like I said, it's not just engine का कॉस्ट, सस्पेंशन का कॉस्ट है, ब्रेक्स का कॉस्ट है, पूरा चेसी बनाना है, फ्रेमवर्क है, इंजीनियरिंग कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है. 8-10 मंथ्स अगर आप कोई कारीगर को बोलो काम करो तो उसका लेबर लगता है. जी. करेक्ट. सो बॉल पार्क फिगर इज रफली अबाउट, आई हैव कम टू रूल ऑफ थंब, फॉर एवरी 100 हॉर्स पावर यू नीड अबाउट 12 लाख रुपीज. Okay, this was say pre-COVID time. अभी डॉलर बढ़ गया. I'm changing it to 14 lakhs now. Okay. So every 100 horsepower you need 14 lakhs. If it's 200 horsepower, you need 28 lakhs to build the car. Because it's not just engine, it's suspension also. Correct. So if 300 horsepower, you need brakes worth 300 horsepower to stop the car. Agreed. It's 300 horsepower, you need suspension worth 300 horsepower. Yes. Yeah, so a 300 horsepower car is going to touch 35-40 lakhs. Obviously. So that is the cost. So people think यार ambassador बना दो. ऐसा नहीं होता है. It's lot of effort going into it. So as much as I would like to go on building them, it's not just pocket friendly or economical to make them. So आप करंटली कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? राइट नाउ बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इनफैक्ट एक फिएट बन रहा है विद सेम निसान इंजन, बिकॉज इवन आई लर्न ऑन अ फिएट. मैंने भी फिएट पे सीखा है. और अपना एक दोस्त है, बोलता है यार करण चाइल्डहुड मेमोरी अपना फिएट है, तो फिएट पे बनाते. तो अभी एम्बेसडर पे बनाया ऑलरेडी 2, तो बोला चलो फिएट पे भी बनाते. नाउ वी रियलाइज फिएट इज स्मॉलर देन द एम्बेसडर फ्रॉम द इनसाइड. करेक्ट. तो हाँ तो बोल दिया है. अभी सर खुजा रहे हम लोग कि अभी चेसी कहाँ से क्या करे, कैसे करे. सो वन इज दैट प्रोजेक्ट. You're making a Mercedes with a 2JZ. Okay. Our favorite combination. Yes. Very road friendly, comfortable car, 250 horsepower. And of course, all my drift cars that are being built, 2-3 वो भी चल रहे हैं साथ में. 2JZ से मुझे याद आया, एक आपका एक और बहुत गाड़ी फेमस है कि आपने एक Mercedes W124, करेक्ट, उसको आपने उसके ऊपर आपने 2JZ इनसाइड का एक स्टिकर भी लगाया हुआ था, राइट? सो 2JZ इंजन का स्पेशलिटी ऐसा क्या है कि यू आर सो फॉन्ड ऑफ इट और द ट्यूनिंग इंडस्ट्री इज सो फॉन्ड ऑफ इट? The world loves the 2JZ. What's the reality? The reason is it's 6-cylinder. Okay. Inline 6 makes a lot of torque. Okay. Okay, when you have a lot of torque means you can pull any kind of weight of car with it. Okay, basically torque is what gets you started. Correct. And then horsepower is what pulls you through. There's a saying, no, क्या है वो? When you hit a wall, torque is how hard you hit, and horsepower is how further you take the wall with you or something, right? Absolutely. So the 2JZ makes so much of torque because it's inline 6. You do little changes to it in original format. From 280 horsepower, very comfortably it'll jump to 330, 350 horsepower. You do little more changes to it.
comfortably or at 410, 440 very nicely. Yeah, so it is very easy to make horsepower. That is why everybody likes it. जी. So even we use the 2JZ because the 124 is a heavy car. It's like feels like a tank when you drive it. The weight. So I could Okay. think of only a 2JZ inline six sitting in the engine bay of the 2JZ with that torque to drive it. So it's very smooth to drive. So even with 4 people and in the 124 with the 2JZ, you will not feel कि I wish I had some more power. Adequate power. Speed breaker से भी जाता है. Signal से you start, it takes off. People look अरे यार 2 ये 124 इतना fast कैसे गया है? फिर अंदर 2JZ है. That you hear the sound, that push sound. करेक्ट. एक आपने थोड़ी देर पहले इनलाइन रनिंग की बात की थी, करेक्ट? तो मुझे उसमें ये पूछना है, जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुका है अब तक इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ओके, ऐसी कोई कार अब तक नहीं बन पाई है जिनमें हमको मतलब वो लिमिटेशंस की ज़रूरत ही ना पड़े, डे वन से हम लोग रेव कर पाएँ? Of course, one word, Porsche. You ओके. have 3 crores, go buy a Porsche. Take it first day to the track. It'll last forever. There are cars. It's not. I'm told even some Ferraris are running. ओके. I don't know about Rolls Royce, but I know the Porsche is a out and out race car. ओके. Yeah, so there are cars. ऐसा नहीं है कि even for that matter, even a Skoda you can take and start driving it. What happens is because the metal will start wearing out in some time. If you had oil consumption, okay, say after 20,000 kilometers, आपकी गाड़ी was going to consume 1 liter of oil for every 3,000 kilometers. अगर आप running in बराबर नहीं किया, तो it will consume 1 liter of oil for every 2,000 kilometers. That is the sign to tell you that your metal is now wearing out faster and faster and faster. So it's not going to damage your car tomorrow morning. Instead of गाड़ी का life is say 5 years, this will reduce it to 3.5 years. You do an engine overhaul and you're back on the road. There's no problem as such. It is just opinion, and like you said, if you just want to take a car and start racing it, then it's a Porsche. सो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ड्रिफ्ट कार्स और ड्रैग कार्स, ओके? सो इंडिया में इन दोनों के ही बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत बड़ा फ़ैन बेस है. पहले तो ये बताइए कि दोनों में इतना फ़र्क क्या है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है या क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है? दो अलग टाइप के फॉर्मेट्स ऑफ रेसिंग है. ओके. ड्रैग इज टू गो स्ट्रेट. राइट. You want to reach one point, starting point to finish point fastest. क्वार्टर माइल. Quarter mile. Okay. Right, that is a drag race. Drift is to do everything sideways. Maximum amount of smoke you throw out, the more points the judge gives you. The more angle you have on your car, more points the judge gives you. Both are built differently. Okay. For different applications. ड्रिफ्ट कार में रेडिएटर शायद पीछे हो सकता है क्योंकि उसको इतना फ्रंटल एयर नहीं मिलेगा तो गर्म होता है, तो यू मूव द रेडिएटर बिहाइंड. स्टीयरिंग एंगल्स आर डिफरेंट because you're not doing high speed, you're on low speed पे maximum turn, so our steering angle in the front can be almost 77 degrees when a normal car is only about 60 degrees. Right. Drag car on the other side is just straight, so the front tires will be thinner. We want all the power going to the power tires, the drive tires, which is usually rear wheel drive. Correct. Suspension is different. A drag suspension will not want to really be very stiff. It will be little soft, so it squats, it grips, and it takes off. So to compare drag and drift is very you're not comparing apples and apples. You're using two different fruits as comparison. But if you're talking about engine rebuilds or longevity of engines, then yeah, these professional drag racing cars in USA, not cars so to speak, top fuel dragsters, they run nitromethane. So after every one pass or one run, you have to open the engine out. At least gasket change, कुछ ना कुछ होते रहता है. जी. Yeah. Most cases, so it's a whole piston change, whole engine is down and back up in hour or something, and so you do the next race again. Correct. But those are doing 3 seconds and 4 seconds quarter mile. Correct. Yeah? If you take the other end of the spectrum, a road going car like a say Skoda, Indian Skoda. Right. That will do quarter mile in 13 seconds. Correct. Little modified. 12.5 seconds modified car. It does not need engine overhaul. It was a road going car and you made it faster. तो वो road का गाड़ी था जो अभी drag कर रहा है. Okay. So it is not going to damage itself as much. Unless
जो ट्यूनर है एंड ही ट्राइज टू डू समथिंग वेरी वाइब्रेंट एंड बड़ा टर्बो डाल दिया और बराबर ट्यून नहीं किया तो कभी पिस्टन ऊपर से निकला या नीचे से निकला या ऑयल निकल गया या कुछ फट गया टूट गया. दैट इज द एरर ऑफ द इंजन बिल्डर, नॉट द engine itself. Okay. So your question being, what is the difference? Correct. Everything is specifically built for an application. Okay. And when it's not done correctly, it causes damage. If it's done correctly, it will last longer. ओके तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि मैंने वो सवाल क्यों पूछा था. प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में एंथुजियास्ट की कमी नहीं है. ओके बट कमी होती है फंड्स की मोस्टली. ओके तो लोग क्या करते हैं, जो एक कॉमन मैन में से जो उठ के एंथुजियास्ट होते हैं वो लोकल मैकेनिक्स ढूंढ के, ओके लोकल सब जुगाड़ जो हम कहते हैं इंडिया में वर्ड फेमस है, वो जुगाड़ सारा फिट करके कोशिश करते हैं वैसा कुछ बनाना जो आपके जैसे प्रोफेशनल्स बना रहे हैं. ओके उनको उतना फ़र्क समझ में नहीं आता है. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, जो इंडिविजुअल उसको चला रहा है या तो उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है या फिर द कार इट सेल्फ बिकम्स अ कंप्लीट स्क्रैप बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट शुड आइडियली. ओके हैविंग सेड दैट, ओके तो एक इंडिविजुअल को ये कैसे पता चलेगा कि कौन राइट मैकेनिक है जो मेरी गाड़ी के साथ या मेरे जो ड्रीम बिल्ट है उसके साथ जस्टिस कर सकता है? यार ये बहुत डिफिकल्ट है टू एक्सप्लेन हाउ टू कौन राइट है कौन रॉन्ग है. बट आई पुट इन अदर वे, अगर आप पाव भाजी के रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे 2-3 टेबल ही चल रहे हैं. बट यू गो टू संतोष सागर, अंदर भी टेबल है बाहर भी टेबल है, वेटिंग भी है और अपन कोई गाड़ी में भी खा रहा है. अग्री. तो मतलब वो पाव भाजी सही है ना. अग्री. तो आपको गो टू अ शॉप, engine tuning shop, and you see how many cars are parked, what kind of cars are parked. अगर आप स्कोडा लेके जा रहे हो और वहाँ एक भी स्कोडा नहीं है तो वहाँ मत खुलवाइए गाड़ी, कहीं और जाइए. That's the only thing I can tell you. I mean, as observation, that's the only way I think to be fair to anybody. Okay, तो थोड़ा और पीछे चलते हैं. आपने कहा कि जब आप सीख के आए थे, ओके उस समय में ये मार्केट जस्ट इंडिया में डेवलप हो रहा था. तो आप आने से पहले, ओके इंडिया में इससे पहले भी कोई ट्यूनर्स थे जो उतने ज़्यादा फेमस रहे होंगे जिनको लेजेंड्स मान सकते हैं या आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? They were before me, of course. In this 60s and 70s, a lot of the royal families used to race. There was big rally in Shovalam, K1000. Lots of rallies were happening. There were older generation tuners like Nanjapas, Changapas, Bathena family, Parsi family. रैली ड्राइवर भी थे, इंजन भी बनाते थे, वेल्डिंग भी करते थे, सब कुछ वो लोग ही करते थे. सो या दे वर देयर, बट दैट टाइम engines were only engines, cars were mechanical. Right. When I came back to India in 2000, it had started moving over into more of an electronic part assisting the mechanical part. Correct. Now it is so much electronics assisting mechanical that we are not reaching only up to mechanical jobs. हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक ही इतना करते हैं कि मैकेनिकल चेंज ज़रूरत नहीं है unless you want to go to a little higher state of tune. तो पहले कोई आता है तो हम लोग तो सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, जैसे आपके फ़ोन में होता है ना, लाइक जेल ब्रेक. सॉफ्टवेयर हो गया, वो चला गया, ही इज़ हैप्पी, 20 हॉर्स पावर मिल गया, जेब में पैसा अंदर आया, आई एम हैप्पी, ही इज़ हैप्पी. ही कम्स बैक, केस और कुछ करो, देन वी विल डू सम हार्डवेयर चेंजेस फॉर हिम. Okay. So going back to the old people you are asking, they were only doing hardware changes. Okay. They only knew physics कि भाई ये टायर मोटा करो, इसको पतला करो, या ब्रेक को ऐसे करो, या ऑयल प्रेशर के पाइप को ऐसे कर दो तो प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेक लगेगा. So that was the old school of races that we had in India. जो अभी they are still most of them are alive. Legends sitting at home, they know what is happening. They must be probably looking at me, hearing my podcast and laughing right now. तो अभी पास्ट टेंस से थोड़ा फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड में, ओके ईवी कार्स का एक क्रेज बढ़ रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी शायद बढ़ रहा है. उसी तरह एक हाइड्रोजन कार का कंसेप्ट आ चुका है. हमारे देश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि मैं कुछ सालों बाद इंडिया से पूरा आईसीई इंजन ही हटा दूंगा. ओके तो आप एज अ ट्यूनर, ओके इसको कैसे देखते हैं और इंडिया की जो ट्यूनिंग इंडस्ट्री है वो आज से 15 साल बाद कहाँ होगी? फ्यूचर आई डोंट सी बिग इन ईवी. ओके बिकॉज सब लोग ने सुना है ईवी का बैटरी, अभी तो बच्चे को ही मालूम है, ईवी का बैटरी बनाने के लिए पूरा माउंटेन को काटो तो इतना उसमें से मेटल निकलेगा ईवी बैटरी बनाने को. सो I don't see future of EV. In fact, I spoke to some engineers in some other countries with manufacturers, BMW and Mercedes,
And even they said that they are doing EVs just because the government is pushing them to, it is mandatory for them to do it. But hydrogen is future. Okay. So answering second part of the question, first part is कि EV मेरे को लगता नहीं है. As a hobby, definitely I will probably make a EV car for myself. Maybe if I find an old rusted Jaguar XK or any of those old 50s, instead of putting a IC engine, then maybe I'll put a EV in. आपको रिक्वेस्ट पे आते होंगे EVs के लिए? अभी तक आया नहीं है. करेंगे हम लोग. Me and my friends, we are working on that. We have a whole engineering company. And we have a lot of students with us kids who come out from tier 2 and tier 3 city colleges. तो वो लोग को भी बच्चे लोग को भी बनाना है तो बनाएंगे. अभी we have our hands full with the ICs and our events. Maybe in 2-3 months we'll jump into some EV to do something. But going to, you're saying what do I see future? My future, my engineering company will run. They will make EVs or they'll make whatever has to be made. But me personally, probably I'll become, maybe not to sound pompous, but become more valuable because I'll be one of the few of those last few engineering boys who studied IC engines. Most of the tuners here or so-called tuners in India, most of them are all commerce graduates. They've learned on the job engine khol ke. So if somebody 20 years down the line has a old generation car, means a bigger generation car, which I only must have built. So he's going to call me, KS, please come as a consultant and solve my internal combustion engine problem. Right. So I don't think I'm going to lose my value, but definitely not very big bright future for tuning industry. For tuning industry. Okay. In electronic tuning, yeah, maybe if there's EV comes with one motor. The next step would be a tuner adds a second motor to the car. Okay. Yeah, or maybe the car only comes with a capability modular system. कि आज ये गाड़ी ले लो, and then 5 years down the line replace the motor and add 2 motors to it, and you now have a 2,000 horsepower car. I don't know. It can become like that, but very complicated to really foresee 8-10 years down with regards to EV. Okay. आपने एक टिप्पणी की अभी कुछ ट्यूनर्स के बारे में. ओके. मुझे ये पूछना है कि ट्यूनर्स कम्युनिटी आपस में कभी मिलके कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग्स भी करते हैं? नहीं, नॉट रियली. आई हैव नॉट रियली सीन two separate companies come together for one project. Okay. Me and a friend of mine, Hind Motorsport, we make a lot of cars together. In fact, all of my cars last 2 years and next few years are going to be with him. Okay. We do a lot of brainstorming to decide what to do, how to do. But others I have not really seen who want to get together to do something worthwhile or in conjunction with each other. He'll say, तुम वो कर रहे तो उसको करने दो, ये कर रहे उसको करने दो, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा. So I have not seen it. Is it because of the competition? It can also be because of competition. It can be because of lack of knowledge on the subject. For somebody may have, somebody may not have. Because वो commerce graduates हैं. Could be, could not be. Okay. Yeah, but just basically it's the knowledge that is not adequate to come together to make something. So probably people may not want to do it. Knowledge से एक चीज़ याद आया. एक फोर्ड की कार है, फोर्ड मस्टैंग, जो बहुत फेमस है आज भी और एंथुजियास्ट में उसका बहुत क्रेज़ है. एक बहुत फेमस कंस्ट्रक्टर थे शेल्बी. ओके. जो फोर्ड के साथ उन्होंने एक जेवी किया था एंड देन दे लॉन्च्ड मस्टैंग शेल्बी. ओके. तो ऐसा इंडिया में आपको आज तक कोई मौका मिला है या आप किसी को मिल पाए हैं हु इज़ अ शेल्बी इन इंडिया? No, so manufacturer has never come to me directly, but some dealers came to me, can you make a car for us? Standard car को थोड़ा upgrade करके दे मेरे को. तो ऐसा किया, but never went around anywhere in a large scale. But I know of a person in South India, his name is J. Anand, and 2-3 manufacturers send him cars and their engines to be worked on, to be modified, to have like a more higher compression, higher horsepower engine from the standard engine. But again, I've never seen the day of light. He may have made many of them, but the manufacturer has never released those cars out in the public or never sold them as a high performance. Example, say suppose Tata Indica. So I've never seen a high performance Tata Indica or a high performance Maruti Suzuki. सब लोग ने काम करवा लिया. It's not that they don't have the capabilities of doing it. Maruti can also make a car worth 7 crores and it will drive as good as a Rolls Royce. But that is not, nobody is going to pay you 7 crores for a Maruti, right?
So it's not that they cannot do it, they've outsourced these things, it's happened, I've seen it, but it's never come out in the market for nobody can come and buy one car. The closest I have seen is, even now you must have heard that Hyundai N series has come out, right? Little good looking cars, sporty looking cars, little exhaust, that's about it. उसके अलावा और ये लेवल में कुछ नहीं निकला इंडिया में. ओके, प्रॉबेबली मार्केट ही नहीं है, पता नहीं. मार्केट नहीं है से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि शायद उतना डिमांड नहीं है, करेक्ट? करेक्ट. बट एट द सेम टाइम हमारे देश में ऐसे भी एंथुजियास्ट हैं जो बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट करवा करवा के यहाँ पे चला रहे हैं. ऑल्दो मतलब अभी रिसेंटली एक फिल्म स्टार ने अपनी एक मग उन्होंने बाहर से स्पेशली कस्टम एक्स्ट्रा पे करके इंडिया में मंगवाया था. मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेयर कार्स इंडिया में आती हैं, ठीक है, तो एक समय के बाद, ठीक है, जब ये आउटडेट हो जाएंगी या जब ये रेयर इतनी हो जाती है कि उनको कोई चलाना नहीं चाहता, तो उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? Oh, rarer the car, more value of the car. So Agreed. aste aste those cars become museum value. So whenever there is a big event, like abhi Udaipur mein event tha 15 days back, lot of rare cars were over there. So your question is कि कोई बाहर से एक गाड़ी लेके आता है, जो होता है all the time, सब लोग बाहर से गाड़ी लाते हैं. इंडिया में तो certain Mercedes are not made here, like AMGs, no AMGs made here in India, the higher ones, the small ones could be, I don't know. So the car comes here, it is used here for 20 years. And after another 10 years after that, that car is a rare car because most of the cars are not functioning. ऐसा कुछ हो सकता है. So अभी के जो events में आप जाओगे, so now in 2024, if you go for an event and you see a 1965 का car, so about 70-year-old car you see. So Correct. even now if somebody imports a brand new Mercedes like you said, and after 70 years goes there, it will be an internal combustion engine, 70 years later will still have some value. Value of cars will stay. The rarer the car, more the value. So your point, the previous question was, are there any high performance cars in India? At those expensive at 2-3 plus crore cars, yeah, they all come from out of the country. But even Maruti can make a high performance car here, but they're not making because they're not enough of buyers for a Maruti. Would you pay 25 lakhs for a high performance evolution version of that S-Cross? Maruti S-Cross, I don't know, say it is say 15 lakhs. Correct. Maruti comes out with the evolution version of the S-Cross. They call it Maruti V S-Cross. And they'll charge you 30 lakhs for it. And it'll have the seat belts, red belts and big brakes and double the horsepower and all that. आप 30 lakhs दोगे Maruti के लिए? That is the question. Why will Maruti then put in effort? It's not that a manufacturer cannot make or they cannot outsource and have it done. It is just not market of India that anybody will spend. Toyota comes out with their Fortuner is I think 60 lakhs now. And if they come out with a higher version of the Fortuner at 75 lakhs, will you pay 75 lakhs for a Toyota? Maybe, maybe not. Some may pay, some may not pay. Correct. Yeah, same way. So it is the value of that, the brand value, which commands that premium that you are thinking people will pay. Mercedes AMG, top of the line, leather interior, carbon fiber dashboard, bonnet, Evo, 4 crores. Sounds about right. That is the problem. ओके, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि इंडिया में कोई शेल्बी है क्या, एक डिस्कवरी टर्बो चैनल है और उस पर बहुत फेमस शो आता है जिसमें एक यूके का ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और एक बांग्लादेश का ऑटोमोबाइल इंजीनियर है. वो दोनों मिला के फ्रॉम स्क्रैच वो कार्स बिल्ड करते हैं. तो आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आज तक मिला है या फिर आपने किसी को ऐसा क्लोजली करते हुए देखा है? नो, देर आर अ फ्यू गाइज इन इंडिया जो करते हैं ऐसा. बॉडी का काम इज लिटिल पेंस्टेकिंग एंड क्या डीसी यूज्ड टू डू बॉडी वर्क. अंदर का सब सामान वही था, सिर्फ बाहर से एस्थेटिकली यूज्ड टू चेंज. मी एंड माई engineering company, we do that. We change the inside, suspension, all of that, but not the outside. So we are not cutting steel and saying, oh, we throw this part and we'll have it reshaped and all. No, we just stick with whatever is the body. अंदर का भी change. But going back to your question कि कभी कोई ऐसा है, there are some guys who are doing it. They're not known. They don't have big YouTube channels. They're in smaller towns. They're not famous. They don't have clientele. So talent बहुत है इंडिया में, मगर इतना अंदर सब गाँव में है कि by the time they surface and they reach the mainstream, the time has passed. आपका ड्रीम कार प्रोजेक्ट कौन सा था या कौन सा है? ओके, एंड आप
अब तक का कितने ड्रीम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं? So most of the first cars that I built, like that 2JZ 124, the Evo, B16, JDM engine Honda, they were all my dreams. So in 2004 I was younger and I was very new. Market was new, so I wanted 180 horsepower engine. I was very happy the day I made it. मतलब wow, I made it. फिर Evo बनाया, मतलब wow, I made Evo. फिर 2JZ. Now what I want to make is a trophy truck. So if you check internet and you just type trophy truck or stadium truck, it's these huge trucks, SUVs, custom built, space frame, tubular chassis, and long travel suspension. So they can jump in the air. Their suspension travel is 2 feet. So I would like to build something like that for myself, which probably, hopefully, in 2025 I should have something for myself. सो वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट अपने लिए है या आप चाहते हैं कि कोई आपके पास उसका डिमांड लेके आए तब आप उसको बना के नहीं, दें? वो मैं ही बनाऊंगा, फिर मेरे को देख के कोई बोलेगा केएस मेरे लिए भी बना के दे। वो ऐसे ही होता है। आई मेक वन कार फॉर माई सेल्फ एंड समबडी सेज प्लीज मेक फॉर मी। ओके, बट आई नो अ फ्यू पीपल, जानता हूँ मैं कि अगर मैं स्टार्ट किया वो काम तो दे विल ऑल्सो से कि करण अभी तू बना रहा है तो एक साथ में मेरा भी एक बनाई दे। आपका आज तक का जितना कार इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस रहा है, आपका सबसे फेवरेट कार कौन सा है और क्यों, ऑफ ऑल द कार्स? सो यू कैन स्टार्ट राइट अवे फ्रॉम 1960s टू 2023. नेम एनी वन और मे बी 2 कार्स जो आपका द फेवरेट है. यू आर लाइक कि ये मेरा कार है, ये मुझको द पसंद वाला कार है. आई एम रियली सॉरी, ऐसा मेरा कोई गाड़ी है नहीं जो मेरा फेवरेट है. लाइक एवरी टाइम आई डोंट नो, इफ यू सी अ कार इन अ पर्टिकुलर कलर, कभी बोले somebody से कि नहीं ये बराबर नहीं है, ये ठीक है, ऐसा क्या है. सेम कार इफ यू सी इन अ ब्लैक कलर, somebody से अरे क्या गाड़ी दिख रहा है, इट मे लुक गुड. लाइक दिस मॉर्निंग आई वाज ड्राइविंग, बाजू से like a metallic white smooth S class drove by me. So many years I've been seeing S class, अपने पेट्रोल पंप पे आता है तो कुछ होता नहीं, ठीक है. आज वो मेरे बाजू से गया तो मुझे लगा यार S class होना चाहिए यार एक बार लाइफ में. तो I really don't know what is my dream car as such, but from tuning's perspective I'm saying, tuner's no, perspective. you know what I really like is something from the 40s, like a long car with those very pointed arrows at the edges of the cars. डिक्की के पीछे ऐसा पॉइंट रहता है, ग्रिल पे आगे ऐसे बड़े 2 पॉइंटर रहता है. समथिंग रियली लुक्स वेरी नास्टी, बट दैट गुड पेंट, सम बिग engine like some 7500cc supercharged engine. So when you started also, इतना नॉइज होगा कि आपका जो नीचे पार्किंग लॉट है ना, ऑल द सायरन्स हैव टू गो ऑफ इन देयर, घड़ 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 घड़. बट समथिंग फ्रॉम द 40s 50s, बिग ह्यूज लॉन्ग अमेरिकन कार इज व्हाट आई वुड लाइक फॉर माई सेल्फ. सो क्या हम ये मान सकते हैं कि शायद 25 में वैसा भी कुछ आपकी वर्कशॉप में देखने को मिल सकता है? एक्चुअली ऐसा गाड़ी बहुत महंगा पड़ता है. सो फर्स्ट आई हैव टू बाय द कार, देन आई हैव टू बिल्ड द कार, बाय पॉलिश इट, पेंट इट. बाय द टाइम आई फिनिश दैट कार वुड हैव कॉस्टेड मी 2 crores. सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी ड्रीम टू फुलफिल. बट एम तो रखेंगे वो ड्रीम का, तब तक वो बीच में वो स्टेडियम ट्रक तो बना दूंगा मैं. और इफ इट गेट्स स्पॉन्सर्ड मे बी 100%, of course. Everything is in ready. In the mind, the whole project is ready. ओके, अगर वो पैसा देता है तो बन जाएगा 1 साल में. ग्रेट. सो करण सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड वी वुड लाइक टू हैव यू वन मोर टाइम टू डिस्कस फ्यू मोर ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट दिस इंडस्ट्री देन. Anytime. I'm glad to be here. We'll meet again whenever you need to have clarity over a lot of things. A lot of people have a lot of questions. I get a lot of emails. Hopefully your podcast should clear up people's thoughts. I'm always ready to help anytime. Surely. Thank you. Thank you very much, sir.